Good evening and welcome to the vocabulary session. This is Anurag Sharma and I will conduct the vocabulary session. Today we'll be talking about various personality types that we have and what are the words that we have in the English language to describe them. In our interactions in the world, we come across multifarious of people having different distinct features. Each person is a type in and by itself, and no one person can be put into one particular bracket. And to our great surprise and to our great fortune, the English language is well equipped to have a word for each and every one of them. Of course, today we'll be studying the 10 of those words, 10 advanced vocabulary that you will be finding very beneficial throughout your legal career. This is especially important in the light of the fact that as legal professionals, you will encounter various opportunities wherein you will have to describe the essential feature and nature of the perpetrator, maybe the victim that you are going to represent as lawyers. So having a command over the language and having these kind of vocabulary in your arsenal, which you are going to use to describe them, is very much important. Today we'll be discussing 10 words, 10 very important words, and I have bifurcated the words into 3 sections. The first is the ism words. Okay, let me take my pen. Sorry. Now, what do we understand by ism? Ism क्या होता है? Ism is one of the suffixes that we have in the English language. Ism, it signifies a manner of action or behavior characteristic of a specified person or thing. इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक मैनर में अगर कोई एक्शन किया जा रहा है, या फिर किसी व्यक्ति को या किसी एनिमल को या किसी एक आइडियोलॉजी का स्पेसिफिक फीचर जिस वर्ड से हमें मालूम चले या उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ इज्म. ओके, इसके लिए वी हैव वन अनदर वर्ड दैट इज मोडस ऑपरेंडाई. What is modus operandi? Modus operandi is the mode of operation means way of doing things. कि किस तरीके से किसी काम को अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जा रहा है. व्हाट इज़ योर मोडस ऑपरेंडाई? व्हाट इज़ योर वे ऑफ डूइंग एन एक्शन? व्हाट इज़ योर वे ऑफ अचीविंग अ गोल? तो वी हैव वन पर्टिकुलर वर्ड फॉर इट एंड दैट इज़ मोडस ऑपरेंडाई. The root of this phrase is the Latin language, and you can use this in your quotidian conversations. Quotidian is one word for the common day-to-day conversations. Okay, the another meaning of ism is a doctrine, theory, religion or Hinduism. We have one example, that is Hinduism, Hinduism and Buddhism and Jainism and things like that. So ism specifies one particular ideology or one particular fold to which one person can belong to. And there is one third meaning of this too, that is adherence to a system or class of principles. For example, Stoicism. We all have heard of the Roman Stoics. So what was the ideology of Roman Stoics? Stoics were people who were of the notion that pain and other things, हमें उससे detach रहना है. Everything that a human experiences, happiness, misery, joy, हमें उससे detach रहना चाहिए so that उससे हम affect ना हो. So this is the ideology of ism. And now, why is this ism important? Because this particular suffix, it forms the part of the 3 words that we will be studying next. Okay, so the first word of today is egoist. Now, who is an egoist? Let us look at the root word of it.
The etymology of the egoist is ego. ईगो का अर्थ क्या होता है? ईगो simply defined is a sense of I, यानी कि अहम की भावना, ये मैं हूँ, ये दूसरे हैं, तो मैं और मेरे की भावना जहाँ पे आती है, दैट इज कॉल्ड ईगो, द सेंस ऑफ ईगो. जैसे इस बॉडी को हम अनुराग कहते हैं, या आप अपने बॉडी को एक स्पेसिफिक नाम से कहते हैं, तो वो क्या है? सो दैट इज द ईगो पार्ट ऑफ योर मेंटल फैकल्टीज. आवर माइंड, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें जो है वन पार्ट ऑफ इट इज ईगो. Ego is that faculty of your mind that lets you or that enables you to identify yourself with your body or one particular set of things. Ego. Now, egoist is a person who is self-centered, thinks only of their own advantage. Okay, these are the synonyms, but let us look at the meaning of the word egoist. Now, egoist, he is always concerned with his own self-interest. ये ऐसा क्यों हो रहा है? ईगोइस्ट जो है ये हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा. इनफैक्ट द ओनली कंसिडरेशन दिस पर्सन हैज इज व्हाट इज इन इट फॉर मी. इसमें मेरा क्या फ़ायदा? यही एक क्वेश्चन है जो एक ईगोइस्ट के लिए मैटर करता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा. हर वो चीज़ जो उसके सामने है उसके लिए तभी तक मीनिंगफुल है जब तक उसमें उसको अपना कोई इंटरेस्ट नज़र आ रहा है. दिस इज़ द पर्सन हु इज़ कॉल्ड एन ईगोइस्ट. नाउ लेट अस लुक एट द एंटोनिम्स ऑफ इट, synonym of it. So the first synonym is a self-centered person, a narcissist, and I have one another word for you, and that is a selfish. जो अपने बारे में सोचें, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचें. ओके, नार्सिसिस्ट वर्ड अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें तो नार्सिसिस्ट की एक स्टोरी है. अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो नार्सिसिस्ट was a character from the Greek mythology who was a hunter, and he happened to be a very handsome individual. So he was cursed by Hera, I think Hera or one particular god, who cursed her to look at his own reflection in the water and die looking at it. So that hunter, once he went to a pond to quench his thirst, and while he was drinking water, what did he do? He looked upon his reflection, and he was so much enchanted and so much enamored by his own reflection that he caught up with it. वो उस जगह से मूव ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि अपने रिफ्लेक्शन को देख के ही जो है अपने आप से ही वो प्रेम कर बैठा. तो नार्सिसिस्ट जिसे अपने से प्रेम हो, दूसरे किससे उसको कोई मतलब नहीं. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड नार्सिसस. उस व्यक्ति का नाम था नार्सिसस. इसीलिए वी हैव अ वर्ड कॉल्ड नार्सिसिस्ट फॉर समवन हु इज ईगोइस्ट, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है. इसका एक एंटोनिम है, दैट इज ऑल्ट्रुइस्ट. वी विल लुक एट दिस वर्ड लेटर ऑन. नाउ वी मूव ऑन टू द सेंटेंसेस, द एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट वी हैव. द फर्स्ट सेंटेंस इज द ईगोइस्ट ऑलवेज पुट्स हिज ओन इंटरेस्ट अबव दोज ऑफ अदर्स. Now this is both a sentence as well as the explanation of the word. Here we have another sentence, that is, she avoided working with him because his egoist attitude disrupted teamwork. Now suppose there is an individual and he is supposed to work as a team. Being part of the team, he is supposed to cooperate, but each and every time his selfish nature comes into the way. So team goals जो हैं वो अचीव नहीं हो रहे हैं because his egoist nature is disrupting teamwork. This is the sum and substance of the word egoist. Now let us move on to the next word, that is egotist. Now what is the essential difference between egoist or egotist? An egoist is a selfish person. An egotist is a person who only likes to talk about himself.
This is the difference between both are self-centered in the sense that वो पूरे दुनिया का center अपने आप को समझते हैं. This whole universe, this whole solar system, it revolves not around the sun as per them, it revolves around those the person, that person. So this is the egotist. So egotist, he does what? He is a person who constantly talks about themselves and boasts about their achievements. हमेशा अपने बारे में बात करना, अपने achievements. He will belittle each and every person and each and every person's achievements, and he will always do what? He will ride on his high horse. This is another idiom that you can note. मतलब हमेशा अपने ऊंचे घोड़े पे रहना, वो हमेशा सबको नीची नज़र से देखेगा. दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ ईगोटिस्ट. अपने बारे में मतलब ही लाइक्स टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ही लाइक्स टू बी द टॉक ऑफ द टाउन. एवरीबडी शुड बी टॉकिंग अबाउट हिम, एंड इफ एनीथिंग which is not related to him is of his no concern. This is the person who is an egotist. So what are the synonyms? Braggart, that means somebody who brags all the time. Boaster, अपने डींग हाँकना. And self promoter, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना या अपनी प्रशंसा करना. We have another idiom for it, and that is to blow one's own trumpet. As I said, English language is very much equipped to describe the various personalities that we have. So, to blow one's own trumpet, egotist does exactly that. अपना राग अलापना, जिसको हिंदी में बोलते हैं. And what he is not, these are the things. Antonyms. एक ईगोटिस्ट क्या नहीं होता? वो हम्बल नहीं होता, वो मॉडेस्ट नहीं होता, है ना? सो दीज आर द एंटोनिम्स. लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंस. द ईगोटिस्ट could not stop talking about his recent promotion. So there was one person and he got the promotion in his organization, but he is constantly and repeatedly talking about himself. And what is the extent to which he talks about himself? The extent is, and here I have another word for you. This is a Latin expression. That is ad nauseam. Ad nauseam का मतलब होता है to the point of nausea. मतलब किसी बात को इतना रिपीट करना कि आपकी तबीयत खराब हो जाए. यू नो, व्हेन वी स्मेल समथिंग पंजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो व्हाट डू वी फील? वी फील नॉजिएटेड. या कोई भी फीलिंग जिससे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हम फील करें, कई बार उल्टी भी आ जाती है, तो दैट इज़ व्हाट वी फील नॉजिएटेड. सो एक ईगोटिस्ट व्यक्ति क्या करता है? ये अपने बारे में इतना बोलता है कि लोग पक जाते हैं, है ना? सो दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द एक्सटेंट टू विच दिस पर्सन इज कीन ऑन टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. This being clear, let us move on to the next word. Now we have the word that is altruist. Now who is an altruist? Altruist के etymology को अगर हम लोग देखें तो we get alter and ist. Alter, that means, इसका मतलब होता है अदर, और इस्ट का मतलब जैसे हमने देखा था विचारधारा. तो ऐसी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति जो दूसरे के हित के बारे में बात करे, दैट मीन्स ही इज डूइंग व्हाट? ही इज फर्दरिंग और एट लीस्ट टॉकिंग अबाउट
others, sorry, इंटरेस्ट। तो ये व्यक्ति ऐसा है जो दूसरे के हित के बारे में बात करेगा, दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा। दिस इज अ पर्सन हु वी कॉल ऑल्ट्रुइस्ट। एक ऐसी विचारधारा मानने वाला व्यक्ति जिसको अपने इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है और वो हमेशा दूसरों के हित की बात करता है, और एटलीस्ट या तो एक्शन भी करेगा या कम से कम बात तो करेगा। ऑल्ट्रुइस्ट, a person who is unselfishly concerned for the welfare of others. This is the person whom we call altruist. Now, what are the synonyms for it? Philanthropist, humanitarian, selfless person. Okay, this word is very interesting, philanthropist. What does it mean? Whenever we get the word which has phil as one of its root word, so phil means love. And anthropist. What is anthropist? Anthropist means anthro means human. Somebody who loves human. तो जिसको दूसरे लोगों से घृणा नहीं होगी, चिढ़ नहीं होगी, प्रेम होगा, तो that person is naturally be going to an altruist. Okay? और ये व्यक्ति क्या नहीं होता है? ये ईगोइस्ट नहीं होता, ये सेल्फिश नहीं होता। एंड लेट अस नाउ मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। द ऑल्ट्रुइस्ट डोनेटेड हाफ ऑफ हिज इनकम टू ऑर्फनेजेस। देयर वॉज वन ऑल्ट्रुइस्ट, ही डिड व्हाट? ही डोनेटेड हाफ ऑफ हिज इनकम टू ऑर्फनेजेस। इसके लिए एक वर्ड और है, दैट इज गुड समैरिटन। Samaritan, sorry, a spelling mistake on my part. Samaritan. Now what do we call a person जो हमेशा दूसरों की हेल्प करता रहता है, even at the cost of his own personal interest, even at the cost of his own mockery? Who is that person? That person we call a good Samaritan, an altruist, a philanthropist. These are the people. Her altruist actions earned her deep respect in the community. Okay, these are the very simple examples. Now let us move on to the next word that we have. Okay, ism वाले words जो हैं वो हमने complete किए. Now we have the word words. Word. Let us first look at the etymology of the word. What? Word means bent. Intro means inside. अब इसका मीनिंग क्लियर हो रहा होगा. Intro means inside. Word means bent. तो an introvert is a person who has an inside or inward bent of mind. He is not at all concerned with the happenings of the world that is going on externally, but he is more at peace. He is more concerned with his own peace, his own mental well-being, his own health, and he is someone who is not outgoing, who does not like to interact with people. It is not minded. This is not the reason. It is not the reason that he hates others. It is simply because he is someone who is reticent. He is someone who is taciturn. He does not want to talk to others. He is a very shy kind of person. So this is his peculiar personality trait, which prevents him to talk to others, and he is not someone who is hating others. Minded. This is the difference. Okay, so an introvert जो अपने अंदर रहना चाहता है, जो एक जगह पे रहना चाहता है, वो ज़्यादा outgoing personality का व्यक्ति नहीं है. So what is the meaning of introvert? A person who tends to be reserved and gains energy from being alone. And synonym, okay, we will look at the synonyms later on.
This particular point is important. Gains energy from being alone. We have in psychology a concept called battery. हर एक व्यक्ति के अंदर बैटरी होती है और उसको चार्ज करने का तरीका अलग होता है. इंट्रोवर्ट एज अपोज टू एक्सट्रोवर्ट, इनकी बैटरी जो है तभी चार्ज रहती है जब ये लोगों से इंटरैक्ट ना कर रहे हों. एंड द मोमेंट दे आर पुट इन टू अ सिचुएशन वेर इन दे आर फोर्स टू इंटरैक्ट विद अदर्स और एटलीस्ट बी इन दी vicinity of people and they are forced to engage in conversations and things like that. So उनकी बैटरी जो है it will drain out. These are the peculiar people, introvert. Okay, let us look at the synonyms. Reserved, a person who is reserved, he is an introvert. He is also called a loner, also inward looking person. Okay, we have another word for these people. One word is TACITURN, somebody who does not like to talk a lot. One another word, that is reticent, RETICENT, reticent. And one another word that we have is wallflower. Wallflower. Wallflower किसको कहते हैं? Wallflower is someone, जैसे किसी रूम में एक घड़ी है या एसी है या कोई भी चीज़ जो डेकोरेटिव आइटम है वो वॉल पे लटकी हुई है, उसका कोई दूसरा काम नहीं, ही इज़ जस्ट अ डेकोरेटिव पीस. वो कोई काम नहीं कर रही है, जिसको कोई जो किसी भी सोशल गैदरिंग में रह के ही डज़ व्हाट, वो साइड में रहेगा, वो किसी से इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो वो उसको कहते हैं वॉल फ्लावर, जो हमेशा अननोटिस्ड अनऑब्जर्व्ड रहना चाहता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड वॉल फ्लावर. दैट पर्सन इज अ रेटिसेंट पर्सन. दैट पर्सन इज अ टैसिटर्न पर्सन. दैट पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन. ओके, let us look at the examples. As an introvert, she preferred reading books to attending parties. This is a mark and I would say the hallmark of an introvert. Given the choice, he will always avoid conversations. He will always avoid social gatherings. He will always prefer reading books to attending parties. And we know why he does that. The introvert found peace in solitude after a long day. It is our social setup that we have to go out, we have to work, we have to interact with people. So introverts are no exception. Even they are bound against their will to go out and talk to people and engage in work. But what do they really want? वो चाहते हैं कि ऑफिस जल्दी ख़त्म हो, हम घर आएँ, अपने आराम से हम बैठें, या तो अपने लोग के साथ बैठे या अकेले जो है आई विल एन्जॉय my novel, reading my novel with my coffee or tea, whatever they prefer. Okay, so this is the introvert. Now we move on to the next personality trait, that is an extrovert. Extrovert is the exact opposite of the introvert. Extro, इसका रूट वर्ड क्या है? एक्स्ट्रो का रूट वर्ड है एक्स्ट्रो, मीन्स बाहर, और वर्ट मीन्स बेंड, जिसका बेंड ऑफ माइंड बाहर की ओर हो. जो अगर हिंदी के वर्ड्स यूज़ करें तो इंट्रोवर्ट जो होता है अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी. बहिर्मुखी मतलब कि जिसका दिमाग, जिसका मन बाहर की ओर जाए, बाहर की चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट. और ये वो लोग होते हैं who is outgoing, who is talkative and who enjoys being around others. They are social butterfly. उनको किसी पार्टी में आप भेज दो, उनको किसी मीटिंग में बोलने के लिए बोल दो, वो उनको आप कोई स्पीच बोलने के लिए बोल दो, without preparation they will speak impromptu, they will speak extemporaneously and they will kill it. This is the trait of extrovert.
सो अब एन एक्सट्रोवर्ट इज़ अ पर्सन जिसकी बैटरी जो है, जो अभी हमने साइकोलॉजी वाली बैटरी की बात की थी, वो तब रिचार्ज होती है या तब उनको एनर्जी मिलती है व्हेन दे एंगेज विथ अदर पीपल, व्हेन दे आर इन द सराउंडिंग, व्हेन दे आर इन द विसिनिटी ऑफ अदर पीपल. दीज आर द एक्सट्रोवर्ट्स. ये क्या नहीं होते, दैट मीन्स द एंटोनिम ऑफ इट. इंट्रोवर्ट नहीं होते, रिजर्व नहीं होते, टैसिटर्न नहीं होते, रेटिसेंट नहीं होते, वॉल फ्लावर नहीं होते, मतलब जो ये इंट्रोवर्ट नहीं होते. Okay, this is the sentence. The extrovert lit up the room with his infectious energy. एक extrovert व्यक्ति ने क्या किया? He lit up the room. He boosted the morale of the people that were present in the room. उनको बिल्कुल चार्ज कर दिया, इलेक्ट्रीफाई कर दिया. कैसे? With his infectious energy. बहुत एनर्जी जिसमें होती है, तो उसकी एनर्जी भी कंटेजियस होती है, इन्फेक्शियस होती है. You know, we have observed कि in the proximity of people who are energetic, who are motivated, who are passionate, they have the ability to recharge others with their passion too. Okay, so that kind of person is an extrovert. I will let you be the judge of what is your peculiar personality trait. But let me share one very interesting fact, that there is no perfect introvert, there is no perfect extrovert. Exceptions can be there, but generally what we see in the world, that people are combination of the both. They are an amalgamation of the both, and these people, we have a specific word for that, and that is an ambivert. Now we move on to the next word that we have. The next word that we will be discussing is an ambivert. What is an ambivert? An ambivert, okay, let us first look at the etymology of it. Word, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि word का मतलब क्या हुआ? Bend, यानी कि मुड़ा हुआ. उसका जो bent of mind है वो अपने अंदर की ओर मुड़ा हुआ है तो इंट्रोवर्ट कहेंगे. बाहर की ओर यानी कि एक्सटर्नल वर्ड में मुड़ा हुआ तो एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे. एम्बीवर्ट मतलब कि ही इज़ समवन हु इज़ बैलेंस्ड. ना तो वो इंट्रोवर्ट है ना तो वो एक्सट्रोवर्ट है. एंड सो व्हाट वो है क्या? ही इज़ एन अमेलगमेशन ऑफ बोथ. वो रिजर्व्ड भी रहना चाहते हैं और रिजर्व्ड रहने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनको आप सोशल सिचुएशंस में डाल भी दो तो दे विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल. सो दीज आर एम्बीवर्ट्स. एम्बी का मतलब क्या होता है? एम्बी equals both. Let us take another example. Ambidextrous, we have one word in English language, ambidextrous. Let us take an example of one fine gentleman from a movie, Three Idiots, Veeru Sahasrabuddin, the virus. Now he has developed a very interesting skill. He was able to write with his both hands simultaneously, left and right. So what do we call that kind of person who is skillful in writing with both of his hands simultaneously at the same time? We call those people ambidextrous. Dextrous means skillful and ambi means both. So somebody who is able to juggle between two things, somebody who is able to perform two tasks simultaneously without having compromised the efficiency and accuracy of any single one of them is called an ambidextrous person. So virus क्या था? Sorry, वीरू सहस्त्रबुद्धीन. So he was able to अपने दोनों हाथों से वो एक साथ लिख पाता था, तो ambidextrous था ना. तो ambi मतलब both. उसी तरह एम्बीवर्ट है, मतलब कि इसमें एक्सट्रोवर्ट्स के भी फीचर्स मिलते हैं हमें और इंट्रोवर्ट के भी मिलते हैं. सो अ पर्सन हु हैज़ अ बैलेंस ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट फीचर्स. सिनोनिम क्या हुआ? बैलेंस पर्सनालिटी, अडेप्टेबल पर्सन, एकोमोडेटिंग पर्सन एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके, एम्बीवर्ट का कोई बहुत स्पेसिफिक सिनोनिम नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में. ओके, बट वी कैन कॉल दैट पर्सन अ बैलेंस्ड इंडिविजुअल. Moving on to the example, as an ambivert, he enjoys social gatherings but also values his alone time. So they are people who are
better placed in both of the settings, social settings and personal settings. वहाँ दोनों जगह पे वो enjoy कर सकते हैं. So उनको कोई fundamental problem नहीं है being around other people. Then we have another word that is anthrope. So we have completed the word part of our lecture. Now we move on to the anthrope part. Now, who is a misanthrope? Sorry. मिसएंथ्रोप का एटिमोलॉजी हम लोग देखते हैं. मिसएंथ्रोप दो वर्ड से आया है. माइसीन, दिस इज लैटिन. इसका मीनिंग होता है बैड. एक और मीनिंग है इल. एक और मीनिंग है नेगेटिव. सो माइसीन कहीं पे भी लगे या मिस जहां पे भी लगे, वहां हमें समझ जाना है कि दैट वर्ड इज अ नेगेटिव वर्ड टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव फीचर और नेगेटिव क्वालिटी यूज्ड इन अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन. Okay, so this being clear, mycene means bad and anthrope का मतलब क्या होता है? Anthrope means, as I earlier discussed, is meaning human. So the meaning that comes out to be is a misanthrope is a person who dislikes and distrusts humankind. जिसको लोगों से बहुत डर नहीं हो सकता है, डर उसका रीज़न हो, बट इफेक्ट क्या है कि ही हैज़ बिकम मिसएंथ्रोप. हो सकता है कुछ ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ हो एंड दिस हैज़ डेवलप्ड अ हेटफुल एटीट्यूड इन हिम टुवर्ड्स अदर पीपल, अ डिस्ट्रस्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पीपल. सो हेट करता है, जो ह्यूमैनिटी से, जो दूसरे लोगों से हेट करता है, जो दूसरे लोगों से चिढ़ता है, हम लोग उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? मिसएंथ्रोप. जो पूरी दुनिया को गलत मानता हो, पूरी दुनिया को विलन मान रहा हो, पूरी दुनिया को क्रिमिनल मान रहा हो. ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट यू पीपल आर यंगस्टर्स हु माइट और माइट नॉट बी हैविंग सम नॉलेज ऑफ एनिमेज, और आप लोग एनिमेज देखते होगे. तो ऑन दैट assumption I will talk about one character from a very famous anime, you must have heard of it, that is Death Note. So in Death Note there was one character, in fact he was the protagonist. Who was that? Light Yagami. Yagami Light, Japanese में surname पहले होता है, तो Yagami Light. So Yagami Light, he in right at the inception of the show, in very first episode, in one of the few first scenes, he and Ryuk, they said one sentence at the same time, and that was the climactic moment जिससे सब कुछ चेंज हुआ. डेथ नोट जो है धरती पे भेजा गया एंड ऑल. सो this being the vocabulary class, I will not be talking about anime. I will only talk about the character. So both of these individuals, they said one sentence: this world is rotten. ये दुनिया जो है सड़ चुकी है. इतनी निगेटिविटी, इतनी स्ट्राइफ, इतनी एनिमिटी, इतने वॉर्स यहाँ पे हैं, इतनी जेलसी एक दूसरे के प्रति, इतना ज़्यादा सस्पिशन, इतना ज़्यादा सिनिसिज्म जो इस दुनिया में है, दैट लेड दोज टू इंडिविजुअल्स टू से दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, दिस वर्ल्ड इज़ रॉटन. और उन दोनों को इस दुनिया से चिढ़ हो गई थी, इस दुनिया से नफरत हो गई थी, पूरे ह्यूमन काइंड से उन दोनों को चिढ़ हो गई थी. So that was the reason they behaved in the way they did. And क्योंकि वो दुनिया से चिढ़ते थे, दुनिया को पसंद नहीं करते थे, ह्यूमन काइंड को पसंद नहीं करते थे, they have basically made the enemy of the human kind. This particular characteristic characterizes them as what? Misanthrope. So Light Yagami was what? He was a misanthrope. A person who dislikes and distrusts humankind. Synonym:
What are the synonyms? A cynic, cynic जो बहुत सस्पिशियस हो, किसी पे विश्वास नहीं करने वाला. Pessimist, recluse, तो दुनिया से जो अलग हटके चलता हो. Pessimist, हर बात में नेगेटिव जो सोचता है. तो cynic. I am reminded of one quote that I read in my childhood. A cynic is someone who, when smells flowers, looks for a coffin. सिनिक एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नाक में अगर फूलों की खुशबू आएगी तो वो ये नहीं सोचेगा कि आसपास कोई फूलों का बगीचा है. पहला थॉट दैट विल क्रॉस हिज माइंड इज़ कि किसी की मृत्यु हुई है और उस पर फूल जो है लोग चढ़ाएं, किसी के कॉफिन पे जो है लोग फूल चढ़ाएं. सो सिनिक इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो ही लुक्स एट द ही डज नॉट लुक एट द गुडनेस ऑफ अदर्स, रादर द इलनेस, रादर द what to say, mycene of others, the negativity, the ill intention, the bad qualities of people. So misanthrope is that person. Antonym, क्या नहीं होता misanthrope? Philanthropist नहीं होता, humanist नहीं होता, है ना, good Samaritan नहीं होता, altruist नहीं होता. Okay, now what are the sentences? The misanthrope avoided all social contact and lived alone in the woods. There is one gentleman who is a misanthrope and he avoided all social contact, यानी कि पूरे सोसाइटी से वो कट गया. and he is doing what? जंगलों में वो अकेला रह रहा है. Okay, so misanthrope may or may not be an introvert too, क्योंकि वो उसको सोशल सेटिंग्स में जाना पसंद नहीं है, लोगों से उसको चिढ़ है. लेकिन इंट्रोवर्ट को आप मिसैंथ्रोप नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इंट्रोवर्ट जो है उसका जो ही इज़ जस्ट अ शाई पर्सन, उसको दुनिया से चिढ़ नहीं. मिसैंथ्रोप को है. तो मिसैंथ्रोप जो है वो हो सकता है दुनिया के बीच में रहे भी या ना भी रहे. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, मिसोजिनिस्ट. ओके, मिसोजिनिस्ट का मतलब जो है एक मीनिंग हम बताना भूल गए. मिसो का मतलब वो एक होता है हेट. सो मिसैंथ्रोप कौन हुआ? मिसैंथ्रोप जो हेट्स समवन हु हेट्स ह्यूमन काइंड. उसी प्रकार मिसोजिनिस्ट कौन हुआ? तो मिसो का तो मतलब पता चल गया. गाइनिस्ट का मतलब क्या है, या गाइने का मतलब क्या है? गाइने, GYNAE, this is again a Latin term meaning of or relating to women. So gyne का मतलब हुआ of or relating to women. Anything that pertains to women or women issues, we generally we will find this particular root word occurring there. Okay, so let us take one another example. Gyne से एक word हमें याद आता है gynecologist. A gynecologist is a doctor who specializes into the ailments of women. Okay, so gynecologist. So misogynist is someone who hates women. Somebody who hates women. आजकल की सोसाइटी में we are finding that this phenomena is growing day by day. Misogyny. And there are good as well as bad reasons for that. So we will not be going into that. But this is a phenomena which is very evident in the present scenario. He is a person who dislikes, despises or is strongly prejudiced against women. जो महिलाओं से बिल्कुल हेट ही करते हैं to the point of what to say, extremity. For example, I am reminded of one quote by Napoleon Bonaparte, and he said something very interesting and a very hateful, a very misogynist thing. Sorry, I mispronounced this word. I pronounced it as misogynist. No, this is not misogynist. It is misogynist. Okay, हम ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमको गायनी वर्ड हमको बताना था, एटिमोलॉजी. तो गायनी वर्ड दिमाग में रहा. आई अपोलोजाइज. ओके, yes, I was talking about that quote by that person, Napoleon Bonaparte. He said, women are factories of child bearing. Women जो है वो child
को bear करने की machines हैं. Now that individual, he made a very misogynist statement wherein he did what? He reduced the identity of woman to one particular function that her body is capable of, and that is being pregnant and to deliver a child. And I don't think that is a very reasonable statement to make, and a very bona fide statement. No, that is not. That is a very misinformed and misogynist statement. So what are the synonyms that we have for a misogynist? A woman hater, a sexist. And what are the antonyms? Antonyms, we have feminist, we have egalitarian. Egalitarian, well, this is something else. Egalitarian is someone who talks about equality of all people. Okay, so in a way, by extension, you can use this word egalitarian in the sense of being the antonym of misogynist, but this is a very extended meaning, not the direct meaning. Mind it. So feminist is someone who talks about women, women's issues and women's rights. This is the person. A feminist is an opposite. He is an antonym of what? Misogynist. Let us look at the sentences. The misogynist made several offensive remarks about women in the workplace. So there is one individual who is a misogynist and he is making offensive remarks wherein he is making a case, he is advocating that women are not supposed to. Now we move on to the word that is misogynist. Now who is a misogynist? As we have already established, miso means hate. Somebody who hates, and he is hating what? Gamist. Gamey means marriage. Again, this is a word from the Latin language, and what does it mean? It means marriage. So somebody who is averse to the idea of marriage, somebody who finds the institution of marriage to be a repulsive institution, he hates that institution, and he does not want anything to do with that institution. So that person is called a misogynist, a person who hates the idea of marriage. So a misogynist is someone who likes to be free, who enjoys his independence without any strings attached to himself. So he wants rights but does not want responsibilities. This is the idea of a misogynist, and this is his worldview towards his individual existence, and he also advocates it onto the other people. So misogynist is someone who hates the idea of marriage. Synonym is marriage hater. Marriage hater is not one particular word, it is a compound word. That means it is an amalgamation, it is a conjunction of two words. So you can use an ordinary person, he will be doing he will making use of this word, marriage hater. But you as lawyers, you are not supposed to make use of these compound words because these are makeshift words. It does not suit you as legal professionals. You are supposed to use precise language, as I said earlier. Unless you are not clear as to what word will be put in what place, I'm sorry to say this discipline is not for you. You can try your luck in some other disciplines, but the discipline of law demands that you have an artful mastery of the language as well as the intricate nuances of the words. Clear? So misogynist is the exact word that you are supposed to use when you encounter a person, or when you are you find yourself in a situation wherein you have to describe a person who is a misogynist individual. Okay, so we often say this thing in vocabulary, that suppose there is a puzzle which is having different shapes, and these are the specific pieces, and there are so many of pieces. Each piece signifies one vocabulary, and this space, this particular word will fit in this space, this particular word will fit in this place, this particular word will fit in this place. You cannot misplace this word to this place or that place or any other place, because that is not appropriate, that is not suitable.
This is the idea of language, in particular legal language. The moment you misuse one particular word, you have basically signed your death warrant as an advocate, as a legal professional. So as someone who has at least a little bit of experience in law, my advice to you students is this: gain artful mastery over vocabulary. And this session, this series of lecture will enable you to do just that. Now we move on to the example sentences. So the first example that we have of misogynist is, as a misogynist, he believed marriage was an unnecessary institution. So misogynist, this is his idea, that he believes marriage to be an unnecessary institution. Unnecessary means a redundant institution. Redundant means wasteful और यूजलेस, बिना मतलब का, इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, यूजलेस. सो इसका आइडिया यही है मैरिज के प्रति कि बेकार ही मैरिज कर रहे हैं. हर मिसोगिमिस्ट स्टैंस सरप्राइज्ड एट ट्रेडिशनल फैमिली. Suppose there is an individual and he or she hails from a family who is having very family-centric values, who believes into the sanctity and purity and important significance of the institution of marriage. They deem marriage to be a very sacrosanct institution. So if there comes an individual from their own flesh and blood and he is talking about marriage in a very negative way, he is saying that marriage is something very inconsequential and it should not be resorted to, it should not be entered into by any sane person. So of course that family is supposed to find that individual and his ideas to be very revolutionary, to be very repulsive. So this sentence is talking about that situation. So a very traditional family, और एक व्यक्ति उसमें ऐसा है जिसका स्टांस जो है मिसोगेमिस्ट है. मिसोगेमिस्ट मीन्स मैरिज के अगेंस्ट में है, वो बातें बोलता है. सो दिस इज द सेंटेंस. नाउ वी मूव ऑन टू द एसेटिक. हु इज एन एसेटिक? एन एसेटिक, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सन्यासी. अ मॉन्क, अ सेज, अ हर्मिट, अ रिक्लूज, जो भी वर्ड मेरे दिमाग में आ रहे हैं. सो दीज आर द वर्ड्स. पॉन्टिफ वैसे पंडित को बोलते हैं, तो डायरेक्टली इस पर नहीं आएगा. इन एनी केस, सो एन एसेटिक इज समवन हु लीड्स अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन and abstains from all forms of indulgence, often for religious purposes. Mind it, this particular part of the definition is optional. But in India, जब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो an ascetic is more often than not, he has left his social life, he has left his family, he has left his riches, material wealth and possessions for religious reasons, for gaining enlightenment, and that is why he is living a life of strict self discipline. इसके लिए हम लोग एक वर्ड और यूज़ करते हैं. To live a life of strict discipline is austere life. To live an austere life, a pure life, a pious life. इसी के लिए इसी का derived word है austerities. AUSTERITIES, austerities. Somebody who performs austere actions, तो उन austere actions को क्या बोलते हैं? Austerities. और उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? Austere. This is an adjective and this is the noun form of it. In particular, the abstract noun. Abstract. Okay. So ascetic के synonyms क्या हैं? A hermit, जैसा हमने अभी लिखा. Monk, recluse, अच्छा ये सब यहाँ लिखा हुआ था. ये व्यक्ति जो हैं बहुत हद तक इनका नेचर जो है मैच होता है इनसे. तो इनका नेचर जो मैच होता है वो है ऑल्ट्रुइस्ट व्यक्ति से. ऑल्ट्रुइस्ट व्यक्ति भी जो है साधु
व्यक्ति को ही कहते हैं। इनफैक्ट संस्कृत में साधु का मतलब अच्छा होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के लिए काम करे, दूसरों के हित की बात करे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन ऑल्ट्रुइस्ट पर्सन। सो आवर करंट वर्ड दैट इज an ascetic is closely related to, it is having a proximate relation to an altruist. But an altruist is not necessarily an ascetic. An ascetic is necessarily an altruist. This we have to understand. Okay. Now we move on to the antonym of it. Antonym. He is not a hedonist. आप लोग जब jurisprudence पढ़ेंगे तो you will study about one jurist by the name of Jeremy Bentham. He gave something called hedonistic calculus. Hedonistic calculus का आइडिया ये है कि every action that we humans perform, उसके दो ही motives होते हैं, either to pursue pleasure or to prevent pain. दो ही एक्शंस हैं जिसके वजह से हमारे एक्शंस गाइडेड होते हैं, कि किसी पेन को अवॉइड करने के लिए या किसी प्लेजर को अचीव करने के लिए। तो हेडनिस्ट व्यक्ति जो है वो हमेशा पेन और प्लेजर के टर्म्स में सोचेगा। बट एन एसेटिक पर्सन, उसके लिए ये सब नहीं है, वो पेन ही खोजता है, इन द सेंस कि वो डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहता है, उसको सेंसरी प्लेजर, सेंसरी ग्रेटिफिकेशन के लिए उसका कोई इंटरेस्ट है नहीं। ओके, तो ही इज़ नॉट सीकिंग प्लेजर। मूविंग ऑन टू द सेंटेंस, द एसेटिक मॉन्क गेव अप ऑल मटेरियल पोजेशंस एंड लिव्ड इन अ केव। अपनी सारी धन संपत्ति छोड़ दिया और वो कहाँ रह रहा है? वो केव में रह रहा है। He adopted an ascetic lifestyle to seek spiritual enlightenment. उसने ज्ञान के प्राप्ति के लिए, निर्वाण के प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए उसने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया, ascetic lifestyle adopt कर लिया। So ये हमारा example है। We have the example of Gautam Buddha, and this land has been fraught with people who have basically abandoned their possessions, they have abandoned their kingdoms, they have abandoned their family, they have abandoned everything in the pursuit of truth. Correct? So this is it. Now we have completed the 10 words that we set out to discuss today. These are the 10 personality traits, and I'm sure that you will be finding these very helpful throughout your quotidian lifestyle as well as your legal journey. So with this, I'm signing off. This is Anurag Sharma. Thank you for being such patient listeners.